Okay, so I was having this conversation with my mother. Now, okay, as a young person, and I have ambitions, and when I tell my mom that I will do this thing, and मैं ये करके दिखाऊंगा, so my mom says that it's good to have ambition, and it's good to say that you will be able to do things, but don't always bring in कि मैं करके दिखाऊंगा. Don't bring in your ego in between कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं करके दिखाऊंगा. Just do your work, जैसे भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो. Now that's a perspective which my mom brings. Then I tell her that भगवद गीता में ही ये चीज़ भी लिखी हुई है कि मनुष्य अपने आप कुछ नहीं करता है, सिर्फ मैं ही करवा रहा हूँ ये. आई एम द मूविंग पावर बिहाइंड एवरीथिंग. कृष्ण ही है वो जो सारी चीज़ें करवा रहे हैं. तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ दैट इज ऑल्सो कृष्ण. मैं स्टेयर पे बैठा हूँ दैट इज ऑल्सो कृष्ण. आई एम ऑल्सो कृष्ण. सो इफ आई एम गॉड and if God is making me do things and then they are asking me to also do the good deeds कि अपना कर्म करो और अच्छे काम करो, then how does that come in between? Isn't God guiding me to do everything that He wants me to do? अच्छा, तो इसमें ना एक्चुअली ये मेरी बहुत ही पढ़ी हुई नॉलेज है, लेकिन कैन यू विजुअलाइज कि आपके साथ कभी होता है कि कोई चीज़ सामने पड़ी होती है लेकिन दिखती नहीं, गुम जाती है ना? I'm not focused towards it. I'm not focused towards it. Yes. तो इसमें साइट और विजन का क्या डिफरेंस है? I don't think sight and vision has anything to do with that, but मेरा अगर फोकस नहीं है तो that is why. तो आपका विजन दिमाग से आ रहा है, उससे आ रहा है, राइट? अब आप उसको फोकस कह लें या कुछ, क्योंकि आंखें तो ठीक है जी, जो उसका साइंस है आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है रेटिना से, सब चल रहा है, बट आपको दिख नहीं रही, सामने पड़ी चीज़ नहीं दिखती, राइट? किसी ने कुछ बोला, आपने सुना, आपका एक इंटरप्रिटेशन है, उसका वो मतलब हो या ना हो, ये हम सबके साथ होता है ना कि मैंने तो नहीं सुना या मैंने सोचा तुम ये कह रहे थे. People hear what they want to hear. What they want to hear. अब इसमें कान का जो साइंस और फिजिक्स या जो भी है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि कान तो सुन रहा है जो आपने बोला, उसको इंटरप्रेट कौन कर रहा है? Who is that? The consciousness. हाँ, right. What is that? I don't know. Exactly. So that is the same thing which will thread everything together. But आपके साथ क्या होगा वो तो आपका कार्मिक बैगेज ही होगा. ऐसे ये हमारी सारी स्टोरीज आती है ना कि इतना संत आदमी था, पता नहीं उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ. अरे क्यों हुआ भाई? मतलब गॉड कांट बी दैट क्रूअल, राइट? या इतना बुरा आदमी है, देखो इसकी लाइफ एकदम सेट है, आज तक एक दुख का एक दिन नहीं बिताया इसने, ऐसा क्यों होता है? गॉड कांट बी दैट benevolent also, ignorant or ignorant, right? Why? How do you explain all this? Okay, as you just mentioned that कि कर्म वाला फैक्टर बीच में आ जाता है. Maybe it's just क्या ये पुराना बैगेज चल रहा है, accumulated चल रहा है? Or maybe the repercussion will be faced later on. I mean, my father says this thing that everyone has an equal share of happiness and sadness in their life. So if you are on a mediocre path where you will face less sadness and like comparatively like इतना ही कम आपको happiness मिलेगी. If you go on the extremes of the axis, तो आपको extreme happiness and extreme sadness over the time आपको face होगी. Like for example, even Ambani, let's say, if he has an immense amount of money, the amount of stress which he gets from that might also be immense. We don't know, but what might be going on in his head. But that's a way my dad likes to look at things. Ah, that's a great way to look at things. But why live in mediocrity? Why not just? My thing really is that if you're living your life, you need to live it to its full potential. Absolutely. Right? So why just say कि this is also sometimes equated to risk taking कि अरे कैसे क्यों कर रहे हो? अरे भाई करेंगे नहीं तो you know fortune favors the brave. Yes. Right? एक वो भी है. So what I'm saying is that today I cannot confirm what my tomorrow looks like, and you can't confirm what your life looks like or whatever. Definitely. Right? So वो तो हमें छोड़ ही देना चाहिए. कार्मिक बैगेज हो सकता है पिछले जन्म में कुछ किया हो तुमने बहुत बुरा, जिसका भी भुगतना बाकी है, right? But what happens 10 years from now? Maybe you can control that today. Okay. So if every day you decide to be a perfect human being, then at some point it will settle, right? You will have the good stuff. And if every human being every day thinks ki it starts now, yes, you may be in the middle of a big crisis, right? But is it a better way to think about it कि यार
होगा. अब you know somebody cheats you out of $100. Either you can get angry or upset, or just let go of 100 rupees. और just say कि यार देना होगा, पिछले जन्म का दे दिया, हो गया. What will that get you? It will get you mental peace today, right? It's already given you forgiveness, right? So आपके कर्म ठीक हो गए. And you can also believe कि अगर उसका नहीं देना था और उसने मुझसे ले लिया तो आगे जाके मिल जाएगा. So that's something to look forward to also. I mean that's a very good perspective. अगर let's suppose if I have lent someone money, let's say I have given somebody 5,000 rupees and that person is not paying me back, so I could either say, or you know, I could crib about it कि उसने 5,000 रुपये नहीं दी and just hamper my mental peace, or I could look at it that way कि हो सकता है मैंने ही उसे देने हो, or I will get the benefit of that 5,000 in terms of 50,000 later on. वापस करेगा, because that's how the cycle will work. There is nothing, I don't believe there is any power, any person in this world who actively wants to, you know, ruin your happiness. मतलब ऐसा क्या है तुम में खास कि सब कोई तुमको ही देखेगा और कहेगा कि इसकी जिंदगी मुझे बर्बाद करनी है? क्यों? Envy. People can be envious. People can be envious, but then can they actually succeed? And if they succeed, will they succeed because maybe in the last lifetime you did it, or you did it to someone else and now it's coming back to you through someone else? I mean, the concept of karma and the concept of past life and the future life, accumulation of the karma and all those things, they are said to be true when it comes to like Bhagavad Gita and right. हम उनकी बात करते हैं हमारे scriptures की, scientifically it has not been proven yet. Correct. Very good. So that is where I wanted you to get to. ये सारी theories हैं. Yes. हमने सिर्फ पढ़ी है. हमने कृष्ण भगवान को आके हमें बताते हुए नहीं सुना है. अगर वो आ भी जाएं और तुम्हें बता भी दें, it is still faith. Faith and also but it is still faith because it's not your experience. Session इसमें बताते हैं from Krishna gave to this person gave to this person gave to this, till it come down to A.C. Prabhupada and उन्होंने जो है भगवद गीता लिखी है as it is. Correct. तो what I am saying is कि अगर मैं तुमको आज ये बोल दूं, मैं भी कुछ ज्ञान दे दूं तुम्हें, you as long as you've not experienced it, this is based completely on faith, right? Absolutely. And a belief कि Gunjan, if she is saying it, it must be the truth, and there's no guarantee, right? And what is the only guarantee? Something that you experience yourself. Yes. And you relate to it. And you relate to it. I can tell you कि सॉकेट में उंगली मत डालना, झटका लगेगा. अब unless you experience that झटका ना, it is just theory. If I tell you to explain the झटका, I cannot tell. I have not experienced it. You've not experienced it. वो तो उंगली डालनी पड़ेगी, झटका एक्सपीरियंस करोगे तभी समझ में आएगा कि this is what an electric shock feels like. And then you can very confidently say that it's not a good happy situation. Absolutely. Right? अभी तो मैं कह दूं, तुम भी आगे जाके 4 लोगों को बोल दो कि सॉकेट में उंगली मत डालना, बहुत ही अनहैप्पी एक्सपीरियंस होगा एंड ऑल दैट. बट दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ अ सरफेस लेवल एग्जाम्पल. इट इज द सेम विद स्पिरिचुअलिटी, इट इज सेम विद गीता का ज्ञान, इट इज सेम विद रामायण, इट इज सेम विद ऑल द टेक्स्ट्स, राइट? टिल यू एक्सपीरियंस what they are saying, you are just going on belief. We are all just parrots. भगवद गीता में ये लिखा है, सुनो. अरे भाई, सब ने पढ़ी है भगवद गीता. मतलब yesterday I was listening to something which was so beautiful. They said 2500 साल पहले गौतम बुद्ध आए थे. 2500 साल से हम वही कर रहे हैं जो गौतम बुद्ध ने किया था, क्योंकि वो बता के गए थे कि ये करो. क्या एक भी गौतम बुद्ध बना? नहीं. राइट? महावीर आए थे 2000 साल पहले, वो भी बता के गए थे कि उन्होंने क्या किया फॉर एनलाइटनमेंट. हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जो बोले थे वो हम करके गए, हम कर रहे हैं. बट क्या कोई महावीर बना? नहीं. राइट? सेम विद रामकृष्ण परमहंस, सेम विद साईं बाबा, सेम विद गुरु नानक देव जी. हम इतने सालों से लाखों लोग से फॉलो कर रहे हैं, वॉट एवर देव सेड वी आर डूइंग इट, राइट? बट वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड, राइट? सो हमारी एनलाइटनमेंट कैसे होगी? आवर एनलाइटनमेंट आई थिंक इज गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल जर्नी. यू नेम मी वन एनलाइटन पर्सन इन आवर हिस्ट्री, माइथोलॉजी, वॉट एवर, जिसका रिपीट परफॉर्मेंस हुआ है.
I don't think so there's anybody who can repeat or replicate anyone's life for that matter. Anyone's experience also. Yes. कबीर भक्ति मार्ग पे है, but उनका experience is so different from Meera's. Guru Nanak Dev Ji is so different from Sai Baba. Adi Shankaracharya is very different from Mahavir or Gautam Buddha. So meaning that yes, these are tools. आपके पास tools हैं. आपकी मॉरल आपको कोई बताने की भी जरूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ बैठ के सोच ही लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई वॉन्ट टू बी अ कंपैशनेट पर्सन, आई वॉन्ट टू बी अ हम्बल पर्सन. वेदर इट यू आर सक्सेसफुल और नॉट इज अ completely different story. But what I'm saying is that everything needs to be worked upon yourself. I need to be a compassionate person. I need to be a humble person. I want to be a courageous person. I want to love unconditionally. तो इसमें आपको कोई किताब, कोई ज्ञान कैसे काम कर सकता है? You have to work on yourself. Who will explain what is love? Till you have not experienced it. Till you've not experienced it. I can today tell you, loving a stray dog is so satisfying. Maybe you will not find it satisfying unless you experience it yourself. How can? Absolutely. Right? ये एक मेरा बहुत favorite example रहता है लोगों को कि you know when you smoke and lot of people around you will give you this story about how they've quit smoking. They've quit smoking. Okay. Right? So you'll get these stories कि मैं somebody was telling me कि मैं ना साई बाबा मंदिर में खड़ा था, I was in the queue and something suddenly happened and I said कि नहीं यार अब नहीं पीऊंगा and I threw the cigarette box away and till since then I have not touched it. Right? ये उसका experience है. Can I replicate that experience by going and standing in Sai Baba के मंदिर के बाहर की queue? No. Right? When will I quit smoking? जब वो एक experience internal मेरा खुद होगा. It could happen on the street. It could happen at a temple. It could happen in my bedroom for all I care. Right? But it has to come from within. ये सारा है will power. अब क्या will power? जब तक अंदर से ही आपका वो so there is some twist that must have happened ना standing in that queue साई बाबा मंदिर के बाहर. एक बिलीफ आया होगा, एक एक्सपीरियंस आया होगा, एक ट्विस्ट आया होगा, कुछ तो हुआ होगा जो उसने फेंका अपना डब्बा और उसके बाद कभी छुआ नहीं, जरूरत भी महसूस नहीं की. राइट? वो ट्विस्ट आना है और वो ट्विस्ट कहीं कैसे? इट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जस्ट लाइक स्पिरिचुअलिटी. You cannot say that we define our own spirituality. Exactly, you will have to. You don't have a choice. You cannot. You can follow people. You can get their gyan, you can get the tools, you can get their experience to reflect upon कि ऐसा क्यों हुआ होगा. Do you think that average human beings are even capable of doing that, or do we need a guru? Like, and by guru I mean अगर हम God नहीं follow करते, अगर हम let's say श्री राम follow नहीं करते, अगर हम श्री कृष्ण follow नहीं करते, तो हम किसी गुरु को follow कर देंगे. But we need somebody to look up to, क्योंकि अगर हम उनको देखेंगे नहीं तब तक हम किसी को follow नहीं कर सकते और हम वो चीज़ उनकी replicate नहीं कर सकते. Do you think human beings itself are capable to not look at anyone above them and just look within themselves without a set benchmark? ये ना एक बहुत बड़ा एक मेरा बिलीफ ये है, अगेन बिलीफ ही है that the guru finds you. अच्छा. You are not supposed to go looking for a guru. Okay. Because guru obviously एक elevated space पे है, right? He will know who the right शिष्य is. ये ना उसमें है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में है. So उसमें एक स्टोरी है त्र्यंबकम बाबा की, who's copper hair. He has copper hair and he's been living for like hundreds of years. And he shows up. और उनका लेजेंड है कि हर गुरु को ये मालूम होता है कि मेरा शिष्य कौन है. And the guru will come to you. So आप ये नहीं कह सकते कि मैं I will chase gurus till I find my guru. Then you are just chasing. You are chasing a mirage. The guru will come to you when, like for example, ये विवेकानंद की बुक्स में है कि वो जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो रामकृष्ण परमहंस रोने लगे, saying कि तुम कहाँ थे. He was looking. विवेकानंद went looking कि मैंने सुना है बहुत सिद्ध बाबा हैं and whatever. And I want to go see him. दर्शन करने गए and Ramakrishna Paramahansa, because he was at such an elevated state, he actually started crying that I've been waiting for you. Almost suggesting that Vivekanand, Narendra नाम था उनका, Narendra, I've been waiting for you. You are the one
who's going to, जो मेरी नैया पार लगाएगा. Okay. So Ramakrishna Paramahansa विवेकानंद के गुरु नहीं थे वो. Then he went to Totapari, who apparently was actually his guru. Okay. और रामकृष्ण परमहंस ने बोला था कि आप बनारस जाएं या जहाँ भी जाएं. Where Vivekanand ran into Totapari and he became the guru.